बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लास्ट सेशन में चैप्टर 5 का हमने रिव्यू किया था। उसमें हमने तकरीबन 3 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे, जो कि एग्जांपल्स के ऊपर बेस कर रहे थे। इसमें हमने जो है वो 3 चीज़ों को प्राइमरीली डिस्कस किया, जिसमें एक जो है वो हमने कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन से जो फिक्स बाइस है उसका इसी एनालिसिस किया है। उसके बाद हमने डिवाइडर बाइस का एनालिसिस किया है। और तीसरी चीज़ जो हमने की थी वो ये थी कि एक मॉडल जो है सर्किट बना के उसके ऊपर जो हमने जो फाइंडिंग की थी उसको हमने किया। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का मतलब है कि ये आपका 30 मार्क्स से पेपर बनेगा। अब हम जो है वो चैप्टर 4 की बात करेंगे। यहाँ से भी जो है वो 2 क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह ताला के एग्जाम में आएंगे। तो इसका तलक डीसी बाइसिंग से है। ये हम रिवाइज करते हुए रिवर्स में जा रहे हैं। और डीसी बाइसिंग में हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो प्राइमरी इक्वेशन वो आपको सामने नजर आ रही है। जी जितेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बता सकते हैं? अनम्यूट करके बता दीजिए। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जरा इन इक्वेशंस को समझिए। ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। चैप्टर 5 से 3 क्वेश्चन और चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है वो हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास बेस टर्मिनल है। इसी तरीके से हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल है और हमारे पास एमिटर टर्मिनल है। इसमें जो बेस करंट है वो आईबी के साथ हम लेबल करते हैं। और इस करंट की वजह से जो आगे जो यानी जो आउटपुट साइड पे करंट फ्लो होती है उसका प्राइमरी तलक बीटा के साथ है, जो कि गेन पैरामीटर कहलाता है। और अगर आप इक्वेशंस देखें तो बेस और एमीटर का जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब ये है कि यहाँ पे इस जंक्शन में, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, हमें नजर आ रही है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सो प्लस माइनस 0.7 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप है। तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें देखें अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू है वो 0.7 के अक्रॉस होगी, करीब करीब होगी। सेकेंड इक्वेशन जो है वो आई ई is approximately equal to IE. So that means the current which is passing through it, although it contains the IB parameter, IB component as well, we can approximate that this current is equal to IC. So this is also equal to IE. So and IC is related with IB with a gain factor beta, beta the gain factor. So these 3 equations are very important when we perform the DC analysis। और ये क्वेश्चंस जो है ये इनपुट साइड को आउटपुट साइड के साथ मिला रहे हैं। और इसमें जो चीज़ हमें नजर आ रही है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ये है कि तमाम का तमाम जो
सेंट्रल जो पॉइंट है वो ये आई बी। दिस इज द कंट्रोलिंग फैक्टर जो प्राइमरीली जो है वो चैनल जो है, जो कि एनपीएम के अंदर चैनल बना हुआ है। लेट मी ड्रा हियर। So the transistor has three components: N-type material, P-type material, and then we have N-type material. When we apply the positive voltage here and negative voltage here, this device, this part of the device become forward bias. So in forward bias, it start acting as a short circuit. Short circuit. So when it acts like a short circuit, then it gives the chance for the carriers to start flowing through this device. Okay. So the current then pass through depending upon the current which we primarily send into this P-type material, which is IB. So IB is here. It primarily control the channel. जैसे अगर आप किसी पानी जो है वो बह रहा है तो दरमियान में एक रुकावट लगा दें और उस रुकावट की मदद से पानी जो है उसका जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करें कि कितना पानी जाना चाहिए, कितना पानी रुकना चाहिए. So this is the whole story, and this component is primarily beta times I. This is, remember, this is this mathematics says it is an exact equation. यानी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो आमतौर पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, एंड वी जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द आउटपुट. लेकिन एक्चुअल जो सर्किट्स होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो बहुत सारी और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. जैसे इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर इसमें एक बुनियादी हैसियत रखता है. इसके अलावा अगर हम एक कंडीशंस एग्री कर लें, एक अपर टेम्परेचर लिमिट और एक लोअर टेम्परेचर लिमिट, उसके अंदर जितनी वेरिएशन है उसको हम इनकॉर्पोरेट करके फाइनली जब इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से अपना डिजाइन ओके करेंगे तो फिर जो है वो एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट रेडी की तरफ जाएगा आफ्टर acceptance from the engineering department and also the product development department. फिर जब वो एक प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा फिर हम यूजर को देंगे, यूजर उसको यूज करेगा. अगर उसकी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी हम उसको करेंगे. तो फाइनली जो हमारा प्रोटोटाइप होगा वो प्रोडक्ट रेडी में चला जाएगा. जब प्रोडक्ट रेडी में चला जाएगा तो एज एन इंजीनियर हमारी टास्क कंप्लीट हो जाएगी. फिर उसके बाद जो है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की टास्क स्टार्ट होगी जो कि उसको प्रोडक्ट रेडी यूनिट को रेप्लिकेट करेंगे, उसको बार बार बनाएंगे और उसके बाद ये कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है तो वो फिर हमें बताएंगे ताकि हम नया वर्जन बना सकें, सिस्टम को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकें, सर्किट को और अच्छे अंदाज. सो दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड. और ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसमें कम से कम ये दो इक्वेशंस तो आपके जिन में होनी चाहिए. 1.7 वोल्ट्स जो डायोड का जो है वो फॉरवर्ड बायस करने के लिए जरूरी है. सेकंड थिंग इज दिस रिलेशन आउटपुट करंट इज related with the input current through this beta because there is no new ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम ये रिलेशन कैलकुलेट कर सकते unless we know the beta or we know that curves जो कि इससे लिंक कर रही है. तो curve help us to find the beta value और उसको फिर हम अप्लाई कर सकते हैं. यूजुअली द बीटा इज गिवन इन द डेटा शीट क्योंकि हम पढ़ के आएंगे. तो डेटा शीट में एक पैरामीटर होगा जो कहलाएगा HF.
दैट इज द बीटा करंट गेन जिसे हम कहते हैं। तो 100 पैरामीटर्स के थ्रू में चैप्टर 5 में हम पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी चीजें जो है वो हम वहां से ले रहे हैं, टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। Okay, operating point is very important when, especially when we talk about a transistor which is working in active region. Okay, so there are primarily three types of regions which are more famous when we see the output characteristics. ये output characteristics है, देखिए input characteristics जो है वो हमें पता है, वो input characteristic जो है वो diode। These are the input characteristics, and the output characteristics are this one. Based on the value of the input, that means the IB value, the IB लिखा हूँ. Based on the different values of the IB, we get the different curves. Different curves which represents the IC. The IC is तरह का, अगर आप देखें, maximum IC, similarly the CE maximum. So the points which are mentioned here are the B, C, and D. These points are primarily inside the active region. तो आमतौर पे ये तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके बनाया हुआ है उन्होंने। आमतौर पे जो रीजन अगर आप देखेंगे तो it is not look like this, जैसे ये बनाया गया, it is just look like this one, ऐसे जैसे छोटा सा एक oval type होता है, and there is a some central point or some central तो हमारी कोशिश ये होगी ना अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को जो रीजन पे फिक्स करें। That is the way how to design a better circuit. So there are also other regions, as you can see in this diagram. One is called the saturation region, and then it's called. In saturation region, the transistor acts as a closed switch. इसको on state भी कह सकते हैं. And when we say the cutoff, it is the off state of the transistor. But for the amplifier case, जो कि हम इस सब्जेक्ट में ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर स्टडी कर रहे हैं, so the transistor will be in this active region, which is also called a linear region. So the operating point has two components. That is total sum up to 3 हो जाएंगे. One component is on the VCE side. The other component is on the IC side, and third one is on the IP side. So the total things which we must taken care of the value of the IP, या ये समझिए कि range की बात होगी, then the value of IC, और इसमें हम जब 2 point की बात करेंगे, then we have to write here a small q as well, okay? Small q. And similarly VCE. And then we also write to small q here. Which show this is the static point or the q point. Okay, this is very interesting graph. अगर आपको ये motivate करे, you should read some details from the text about this graph. Now we are moving ahead, and our task is to do some examples. तो इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल जो है उनको करें। कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिजाइन में, और इसी तरीके से जो है वो सर्किट्स जो वो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करते हैं। तो जो कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें से जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। So the fixed bias configuration is a very simple and basic configuration, जहाँ से ये चीजें जो है वो DC एनालिसिस की बुनियाद या बेसिक्स जो है वो स्टार्ट होती है। So the circuit looks like a very simple circuit. So there are number of parameters which are given. VCC is given, RD is given, RC is given. Similarly, so with these 3 parameters, you
are required to calculate the IP, the IC value, and similarly the VCE value. These are the three important values which you should primarily determine through the analysis. And that analysis requires some formulas. Okay. So we skip the part of the derivation of the formulas and we will provide you the formulas. Okay. So this is the way how we take the exam for this course. हम आपको formulas देंगे और आपको circuit देंगे, and then your task is to apply those formulas to solve and find those values. Let's see. एक example हम करके देखते हैं fixed wise की. There's also some derivation if you want to. अगर आपका electrical engineering या analysis अच्छा है, then you can do this. Okay, so this is the circuit which is given to you, let's say, and some equations are given to you. Let me just copy it, जैसे हमने last time किया था. We will make the question and then we solve it. Okay, then we compare it to our result. So this circuit is given. Let now write the question. Okay, remember the following for the fixed bias configuration. IBQ, ICQ, VCEQ, VB and VC, VB. These two parts are not important for me. The important parts are now available. Okay, so this is your question. ये आपका question है, ये आप ये find कीजिए. So the formulas are given. Let me write down the formulas. I just need to just delete it because this is not the part of the question. This is also not the part of the question. So these are the two related question formulas. I need to have another formula. उस formula को मैं ले आता हूँ सामने. Okay, so this is the question you got. ये आपका question बनेगा कि you are to find the following, determine the following for the fixed bias configuration. So this is your question. Then you have to use these formulas and then solve this circuit. अब सर्किट के अंदर VCC, RB और RC दिए हुए हैं. Let me just make it a real question. Okay, एक real question बनाता हूँ. So I will not give you the RB. This is RB. I will not give you this is RC. You should know this is RC and this is RB. And similarly, I will not give you that this is VCC. पता होना चाहिए कि ये VCC है. And this circuit you will get the value of the beta. So the first task for you is to just write here that this is the resistance which is connected to the base terminal of the transistor. Because this is the base terminal of this transistor. And this is the NPN transistor. And similarly, this is the emitter terminal and this is the collector. So the resistance which is attached to the collector is the RC resistance. Similarly, we have VCC. Now it is very clear that we can apply those formulas. So VCC value can be written from here. Well,
VB value we know that 0.7 volts. अगर ये दी हो या ना दी हो, you have to write here 0.7 volts. Then RB is 240K. Okay. Remember K means 10 to the power 3. Okay. So the answer will be in milliamperes and microamperes. Remember, इसका answer जो है, you should have the answer typically in microamperes. Remember, micro means 10 to the power -6. You should be able to write these things. Units are very important. So next is, once we get this value, we can write this value in the second formula and the value of the beta 50 multiplied with IB to get the next answer. Okay, IB is the value जो कि हम इससे पहले वाले इससे निकाल के. Once we get the value of IC, we can put IC value here, RC value here, and DC value here to find what is the DC. So we write here 12 minus. So IC की जो value हम यहाँ मालूम करेंगे and multiplied with RC. So RC is 2.2K. So IC multiplied with 2.2K. Now let's use calculator to solve it. ताकि फिर हम इस आंसर को कंपेयर कर सकें. So I need a calculator here. So I take the calculator. Let me remove these annotations from here. So I just remove those annotations. Now 12 minus 0.7. So 12 minus 0.7. So 11.3. Okay, divided by 240. Divided by 240. So what I get is 0.04708. So this answer is in milliamperes. Sorry, in amperes. So we have to convert it into the corresponding units because 10 to the power 3 भी यहाँ पे मौजूद है. So if I have to multiply it with 240 multiplied with 10 to the power 3, your answer वो छोटा हो जाएगा. So what we get from here is, मैं इसका decimal point shift करूँगा. So I get 47.08. So I write here 47.08. Why? Because I have to shift the decimal point 2-3 levels ahead to primarily make it for the units. अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में करूँ, let's see आप लोगों के लिए भी फायदा हो जाए. Let me do it in a more detail ताकि आप लोग इसको और अच्छे अंदाज में समझ सकें. So I just remove the rest of the things from here. Let me calculate afterwards. So in doing it in detail, so I write here. So this value is equal to 12 minus 0.7 is 11.3 divided by 240. And because 10 to the power 3 here, I have to write 3 more zeros. And now I calculate it. So I calculate it now that 11.3 multiplied with 240 and again 3 more zeros. I have to divide it. इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटर में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, so I have to divide it. So 240 and then there are 3 more zeros, and as you can see the value is 4.708 into 10 to the power -5. Okay, so I write it from just calculator that 4.708 into 10 to
की पावर -5. This is coming from calculator, scientific notation. So if I move the decimal point from here to here, okay, I want to write 10 की power -6. So to write 10 की power -6, I have to shift this decimal place. जब मैं इसको 10 की पावर -6 लिखूंगा, ये वैल्यू और कम हो जाएगी. So to accommodate that value, I have to shift this decimal point to one place to the right. So after shifting the decimal point, I get 47.08 10 की पावर -6, जिसको हम जो है वो माइक्रो में फिर लिखेंगे. Okay, this will become the micro amperes. Once we get this value, we multiply this value with the beta. Beta is given as 50. So we multiply this value with 50, multiplied with this value with 50. So what we get here is 2.3 milliampere. This ICQ value 2.354 milliampere. Then we use these values in the third formula to get the final, which is BCEQ. Okay, let's see our answer and compare it with the answer which is given in the book, because this is the example जो हमने किताब से ली थी. So as you can see, after applying the formula, we get to 47.08 microamperes. And similarly, we get 2.35 ICQ value. And after putting these values into the third formula, we get what is the value of BCEQ. Okay, this is the revision as well as how we primarily make a question for you, ताकि आप question आसानी के साथ कर सकें. Students, if you have any question, एक session हमारा complete हो गया है. Okay, if you have any questions, जी अली आपका कोई सवाल है? Okay, session is in after. हेलो जी बेटा बोले. जो सर ये रुक रुक के आवाज आ रही थी सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि सर बारिश आ रही है यहाँ पर. सर कौन सी जगह है? ये शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगड़. सांगड़ से आओ. अच्छा, वेरी गुड. जी जी. मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा आपके लिए ताकि आप उसको जरा देख लें. आज पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड सेशन थोड़ी देर में करते हैं. ठीक है.